हाँ जी, वेलकम टू दिल दे गल्ला। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू थॉटफुल थर्सडे। हम पिछले कुछ समय से बात कर रहे हैं माइंडफुल मंडे के अंदर डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन जो कि एक मॉन्स्टर है जो लोगों की जिंदगी से उनकी जिंदगी को खींच लेता है, और जो लोग डिप्रेशन से नहीं लड़ पाते हैं वो अपनी जान खुद ले लेते हैं। बहुत सैड है। लेकिन हम कुछ ऐसे लोगों से मिले जो इस डिप्रेशन नाम के मॉन्स्टर को हराकर, मारकर ऊपर उठे और दोबारा से अपनी जिंदगी को उसी तरीके से जीने लगे जैसे कि उनको जीना चाहिए। आज हम आपको मिलाएंगे जोसेफिन जी से, जो जानी जाती हैं मिस जोशी के नाम से। हम आज एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है शेयर अ स्टोरी। हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है शेयर अ स्टोरी। इस सीरीज के अंदर हम उन लोगों को इनवाइट करेंगे जो एक पॉजिटिव वाइब्स, एक आशा की किरण हम लोगों को दिखा सकते हैं। हम उनकी जीवन से कुछ सीख सकते हैं कि कैसे डिप्रेशन नाम के मॉन्स्टर से लड़ा जा सकता है। ये अमृत पीकर अमर नहीं हो सका है, इसे हम मिलकर मार सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं जोसफिन जी से। जोसफिन जी नमस्कार। Namaste. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिल दिया गल्ला। And thank you for inviting me to, talk about my personal experience, right? ये आपका बड़प्पन है, लेकिन हम सच में आपके शुक्रगुजार हैं भी आपने समय निकाला। और हमारे जितने भी दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं कि डिप्रेशन से कैसे लड़ा जाए, वो आपकी बात से शायद कुछ सीख पाएंगे। उन्हें भी शायद ये मालूम चलेगा भी एक गुफा के अंत में Exactly. एक रोशनी की किरण होती है। तो जोसेफिन जी, मेरे 5 प्रश्न है आपसे। पहला प्रश्न तो ये है आपसे, आप हमारे दर्शकों को बताइएगा, आप डिप्रेशन का शिकार थे, आपको ये कब महसूस हुआ दैट समथिंग इज रॉन्ग? आपको कैसे डायग्नोस हुआ? आपकी फैमिली ने क्या सपोर्ट किया आपको? जब आपने मेडिकल हेल्प ली तो उस समय आपका क्या फीडबैक था दवाइयों के प्रति? क्या वो दवाइयों ने आपको हेल्प की? क्या साइड इफेक्ट हुए? और उसके बाद जब आप इस थेरेपी से गुजर रही थी तो जर्नी कैसी थी और आज आप कैसे महसूस कर रही हैं? मैंने सारे प्रश्न एक बार में पूछ लिए क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं आपके और हमारे दर्शकों के बीच में हूं। तो ऑल ओवर टू यू जोसेफिन जी। Thank you for asking me. And अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आई कैन कनेक्ट विद अदर्स, है ना? क्योंकि नहीं तो लोग समझ नहीं सकते। मुझे भी पहले नहीं पता था कि बिफोर आई गॉट सिक मुझे भी नहीं पता था कि डिप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, सो मुझे नहीं पता था। एक्चुअली मेरे बारे में मैं 20 साल मैं हेल्थ केयर में काम कर चुकी हूँ। तो मुझे पता था कि दूसरों को डिप्रेशन होती है, सिक हो जाते हैं मेंटली व्हाटएवर, राइट? फिर मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था पहले, बट इन 2012 मैं सिक हो गई। सिक का मतलब नॉर्मली मैं ना लाइक बहुत ही पॉजिटिव, खुशी वशी, लाइक जोक करके घूमने वाली लेडी, सडनली ऐसा लगता था कि कुछ मैं एक डार्क जगह में बंद हो गई हूँ। मेरे लाइफ में चीजों में इंटरेस्ट कम होने लगी, भूख नहीं लग रही थी, बॉडी एक शुरू हो गया और बेड से उठने का लिए मन नहीं करता था। आई कुडंट गेट अप। एंड एवरी मॉर्निंग जो मैं उठती हूँ ना, मुझे ब्लाइंड्स खोल के ना सनशाइन देखने का बड़ा अच्छा लगता था। बट व्हेन आई स्टार्टेड टू फील डिप्रेस्ड, आई जस्ट वांटेड टू शट एवरीथिंग। आई डिडंट वांट टू स्पीक टू एनीबॉडी। ऐसे मैं होती जाती थी, like I'm stuck in a very some kind of a black hole and I cannot get out of it. कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे, things of all those kind of things. मैं बच्चों से बात भी नहीं करना चाहती थी, मेरे बच्चे are very close to me, and I was ignoring my husband. I couldn't do any work. These were the symptoms I was experiencing, right? So I knew something is not right with me, but I didn't know exactly this is what depression is all about. But I've read about it. When I was working in nursing, I knew these are the symptoms. So I knew something is not right with me. Something is, not feeling, I wasn't feeling good. And the most important thing was I wanted to say is, जब आपको डिप्रेशन होती है ना, आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, बिकॉज आपकी फैमिली आपसे एक्सपेक्टेशंस रखती है, काम पर आपको एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, एंड सडनली आप वो सारा मीट नहीं कर सकते हो। तो आपके अंदर ना एक अजीब जैसा लगता है कि मे बी आई एम नॉट गुड, मे बी समथिंग इज आई एम नॉट डूइंग गुड, और व्हाटएवर फीलिंग्स आने लगते हैं, राइट? सो फॉर दैट रीजन आई वाज आल्सो ashamed दैट आई एम लाइक, बिकॉज मैं काम पर यूनियन रेप थी, सब कुछ करती थी, मुझे लोग फोन करते ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस के ये वो, एंड आई वाजंट एबल टू आंसर बिकॉज माय माइंड वाज नॉट फंक्शनिंग. My
my cognitive skills went down big time. मैं सोच नहीं सकती थी, इस तरह होने लगा मुझे, राइट. तो रोज मेरा हस्बैंड बोल रहे थे तुझे क्या हो रहा है, चलो बाहर चलते हैं, मैं तुझे डिनर खिलाता हूँ, ठीक हो जाएगी. और यू नो बिकॉज मेरी फैमिली भी डिनाइल में थी कि ये सिक हो रही है, राइट. वो वही एक्सपेक्टेशंस रखते थे कि जैसे पहले थी, उठ बेड से उठ, यू नो बाहर जाते करते वो करते, यू विल फील बेटर एंड ऑल दैट, राइट. ऐसे करते करते मैं खुद ही बिकॉज ऑफ शेम, बिकॉज मुझे समझ आने लगी कि आई एम नॉट वेल. एक वन डे आई वोक अप एंड आई न्यू आई एम नॉट वेल, बिकॉज मुझे सुसाइड के थॉट्स आने लगे, यू नो. जो सुसाइड से थॉट्स आने लगे तो मुझे खुद ही डर लगने लगा, राइट. व्हाट इफ आई एक्ट ऑन माई थॉट्स. एंड उस टाइम मुझे पता चला आई नीड टू डू समथिंग, आई नीड टू गेट हेल्प. आई कैन नॉट प्रिटेंड लाइक यू नो एवरीथिंग इज ओके. तो मैंने एक मेरा क्लोज फ्रेंड को ना रो के फोन किया कि समथिंग इज नॉट राइट विद मी. दैट इज द फर्स्ट थिंग आई डिड. बल्कि मैं फैमिली से नहीं बता सकी, बिकॉज they wanted me like, you know, mom always does everything. My husband, you know, Josephine is smart, she's doing this and that, you know. So I just didn't feel comfortable telling my own family, because I thought like, you know, I would be like, because मेरा husband एक बार बोला कि ये जो डिप्रेशन की बीमारी है ना, वो घोरों लोगों की होती है. अभी वो ऐसे नहीं है, अभी वो पूरे एजुकेटेड है, मेरे साथ हर वॉक में चलते हैं, पूरे सपोर्टिव है. बट एक जमाने में उन्होंने मुझे बोला कि ये जो डिप्रेशन की बीमारी होती है ना, गोरों लोगों की होती है. सो आई वॉज लाइक रियली फीलिंग बैड अबाउट इट. लाइक हाउ कैन एक्सप्लेन टू दिस मैन दैट आई एम बिकमिंग सुसाइडल. आई जस्ट डोंट वांट टू लिव. My hopes are dying and I'm not feeling good. But I called up this friend. She knew immediately that I am really sick, because I lost like 17 pounds. I couldn't eat. So she immediately came to my house and she sat with me, and I cried and I cried and I cried. I said like, I have nothing. I kept on telling her I have nothing to live for, and my life is finished, and I have nothing to live for. And I'm just going to, I'm just going to die. That's all I kept repeating to her. She's like, no. Actually, this is what I want to say like later on, that, when you feel like this, pick up the phone and call someone who you trust, because that is the very crucial point. Okay, a lot of people at that point think that, what, this is it for me, I'm going to end my life, and they act on that and they commit suicide. And this is where I was. But if I had not made that call to my friend, maybe I would have acted on that too, because I was not comfortable telling my own family, right? तो मेरा फ्रेंड ने बोला नहीं, तुझे हेल्प करेंगे हम, कुछ ना कुछ करेंगे. तो फिर उसने बिठा के मेरा हस्बैंड को, फर्स्ट थिंग मेरा हस्बैंड को समझाया कि ये सिक हो गई है, ये ठीक नहीं है, इसको कुछ हेल्प करनी पड़ेगी. एंड अदर पॉइंट वाज दैट आवर मेडिकल सिस्टम समटाइम्स हियर इज when it comes to mental health, it's not functioning well, I should say that, because we were trying to get an appointment with a psychiatrist, and I was put on waiting list for like 2 months or something. But if you are really sick, by the time you get to the psychiatrist, you can end your life, if you don't get treated right away. So luckily for me, because I was having suicidal thoughts, my family doctor was very kind and helpful. He actually rushed me into, VGH emergency, and that's where I got the help, right? Like I got to see a psychiatrist immediately, and he had a long conversation with me. He had a conversation with my husband to explain. It's not like I even told him that. He said, why did you not tell your husband all these days and you were suffering and you were sick? I said, because he said that, depression is only Gora people's bimari, and, it doesn't happen to us Indians and all. Then he says, that's when he needs to be educated, right? So then he sat me down and said, you know what? There is light at the end of the tunnel. You can get better. You can come out of it, and we will help you, right? And there are a lot of step by step, we are going to have some, we're going to take few steps here how to go about it. First thing was medication, right? He said first thing was medication. And having said that, the first medication he gave me, antidepressants, वो मेरे ऊपर लगे ही नहीं है. मुझे बेकार के side effects होने लगे, and they were making me like more depressed and, more anxious, right? So 2 या 3 हफ्ते के बाद, my psychiatrist has to change the medication again. He was trying, because when they prescribe you the antidepressants, if they don't work on you right away, don't be disappointed, because it takes time, and sometimes your doctors have to try different medications because it doesn't work on everybody, right? So finally he got me a second prescription, and that worked on me. Like
I can like, but again, antidepressants take at least 4 to 8 weeks to go into effect. They don't work on you right away like you take Tylenol or Advil, right? So you have to keep taking it. So in the beginning, I had a lot of side effects like upset stomach, migraines, and all sort of things. And honestly speaking, I wasn't even taking my medication because I just didn't had any hope. Like, I was hopeless. I thought, this is it. I'm going to die. I have nothing to live for. That's exactly I thought. My whole thought processing was completely changed than how I'm speaking to you today, full of life, positively. I wasn't like that. And my sons were mixed the medication, antidepressants into, chai or tea or something or other thing. They would mix it with the food and make me take it because that's how bad it was. I was refusing to take the medication. And then once the medication started, they put me on outpatient therapy, which means twice a week I would go to VGH outpatient therapy clinic and go through the therapy there. It was called the mindfulness, right? Like I was attending that. So, but in the beginning, my mind wasn't there at all. Like I could not concentrate on what they were telling me, how to cope with it. They call the tools. They give you the tools to feel good, right? So my psychiatrist said, because I was visiting my doctors 2-3 times a week. And then my husband supported me totally. He would drive me and all that stuff. My sons would take me. And because by then he understood, depression is not just affecting the Caucasian people. It could be, it can affect anybody, anywhere, any kind of people for various reasons. It could be your trauma in your life or a death of your loved ones or a chemical imbalance in your brain. For whatever reasons, you can actually get depression, And another thing I wanted to say, there's a huge stigma attached to depression, especially in Indian community. They tell you, don't talk about it. किसी को नहीं बताना. लोग सोचेंगे कि आप पागल हो गए हो. ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आपको कैंसर होता है, आप दवाइयाँ लेते हो. आपको डायबिटीज होता है, आप दवाई लेते हो. आपकी कुछ भी बीमारी की आप दवाई लेते हो ना, अगर माइंड खराब होता है उसके लिए भी दवाई लेनी पड़ती है. उसके लिए भी हमें हेल्प लेनी पड़ती है. उसमें कोई शेम की बात ही नहीं है. आप दवाई लोगे, आप अपना थेरेपी करोगे और सपोर्ट एंड सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. And for me, they asked me to start from the medication. जैसे मेडिकेशन 4-5 हफ्ते के बाद इफेक्ट होने लगा, फिर मैं थेरेपी शुरू हो गई. थेरेपी के बाद मुझे मेडिटेशन करना सिखाया, माइंडफुलनेस सिखाया. आई वाज आस्क्ड टू वॉक एवरी डे. इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स आके मेरे रोज मुझे वॉक में चले जाते थे. मेरे फ्रेंड्स या मेरा हस्बैंड कोई ना कोई जबरदस्त मुझे बाहर लेके चले जाते थे. कभी मैं बीच में जाती जहाँ मुझे अच्छा लगता था. मेरा जो डिप्रेशन के पहले मुझे जो जाना अच्छा लगता था, मुझे लेके चले जाते थे. Slowly I started to get better, but it wasn't like overnight. It took me at least 1 year to come back to where I was, like to fully get better, right? It took me a while. And in fact, अभी भी मैं therapy में जाती हूँ once a month. पहले मैं ज़्यादा because I have to keep going, because once you go through that thing, they say that sometimes it comes back to you, or you feel low or whatever. इसी की वजह से मैं अभी भी once a month therapy के लिए जाती हूँ. It's just a normal talk with a therapist. It's nothing, but I'm doing good. So what I wanted to say is, like, if you or your family or friends, anyone goes through these symptoms like I did, like, one day you wake up and everything looks so black to you, like you feel like your life is not worth living, and you lose interest in everything. If you lose weight, and depression even can give you physical symptoms. प्लीज आप फोन उठा के किसी को फोन करें. दैट्स वेयर इट स्टार्ट्स. चाहे आपका फ्रेंड, चाहे आपका कोई भाई बहन, और इफ यू ट्रस्ट योर फैमिली मेंबर, किसी से भी बात करके बोलिए कि आई नीड हेल्प, एंड हेल्प विल बी देयर फॉर यू. दैट्स वेयर द फर्स्ट स्टेप इज, राइट. और उसके बाद आपको डेफिनेटली हेल्प मिल जाएगी, एंड यू विल फील बेटर, एंड देयर इज ऑलवेज होप. एंड लुक एट मी. इफ यू सी मी इन 2012, आई वाज bedridden. I was not talking to anybody. I was completely in my own little, black hole, and I've come out of it. And this is my life's goal now. I go everywhere and I talk about mental health, because there are so many lives I've lost for suicide, right? When it can be easily treated, easily treated, like so many people have committed suicide. And in fact, that's the biggest, this thing of our, the modern time right now. Mental health is the big issue, which is, completely इग्नोर किया गया हुआ इसको, और इसको कोई एक्नॉलेज नहीं करता, बिकॉज एक स्टिग्मा है ना. मेंटली
पागल हो गए लोग, पागल हो गए, ऐसा नहीं है. मेंटल इलनेस में भी काफी कुछ इलनेसेस है, लाइक बाइपोलर डिजीज, स्किज़ोफ्रेनिया, व्हाटएवर. बट डिप्रेशन इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली 100% can be cured by medication and all the other tools they give you, and you can come out of it 100%. So here I am telling you that अगर आप या आपके कोई भी फैमिली फ्रेंड्स, कोई रिश्तेदार डिप्रेशन से सिक होते हैं, उनके सिम्टम्स को भी नोट किया. अगर आपके कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स आपको लगता है बात नहीं करते हैं, किसी से मिलते नहीं है, खाना नहीं खाते हैं, कुछ आइसोलेटेड हो गए हुए, उनको कांटेक्ट करो. दैट्स इम्पोर्टेंट कि आप उनके देखो, कि पूछो कि क्या हो रहा है, कैन आई हेल्प यू, कैन आई टॉक टू यू. दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स, राइट? सो this is what my journey has been, and I've been a huge advocate for mental health for the last couple of years. And speaking about my own self wasn't easy for me. It took a lot of courage because my own, family members and all, they were like, लोग क्या कहेंगे, क्यों बात कर रही है, क्यों टीवी शोज में जा रहे हैं, कोई सोशल मीडिया में लिखती है, लोग क्या कहेंगे. बट मैंने बोला, लोग क्या कहेंगे जब हम खुद ही मर जाएंगे, तो कोई नहीं, हमारी जिंदगी नहीं रहेगी, राइट? So this is what my goal has been right now, to raise awareness, especially in the Indian community, because even now there's a huge stigma attached to it, right? And I recently had a friend telling me that she wasn't feeling well. She was very depressed, and doctor told her to go on antidepressants. And a mother and mother-in-law both told me, ना ले, दवाई ना ले, तो और भी बीमार हो जाएगी, और किसी को पता चला क्या सोचेंगे. See, this is what again, they don't want to, they discourage you from taking antidepressants, and that is not the case. Like I said, your body gets sick, your mind gets sick. If your body can be treated, your mind can be treated, and there's always hope. And you can live a happy, productive life after you get better from depression. These are my thoughts, and आप कुछ बोलिए. मैं तो I was speechless. Yeah. First of all, thank you very much, Josephine ji. I want to say a clap. Thank you. आपने जो कुछ बातें कही है ना, ये बातें हम बहुत बार हमारे व्यूअर्स से कर चुके हैं. शेम एंड ब्लेम. एंड हमारा टाइटल हमारा कहता है ब्रेक द स्टिग्मा. हम लोगों को ज्यादा नहीं सिखा सकते. आपने भी खुद कहा मुझे, आपके परिवार में भी एक्सेप्टेंस नहीं थी इनिशियल. एग्जैक्टली. ठीक है, आप ठीक हो गए, आपने अच्छी बात बताई, उसकी भी एक्सेप्टेंस नहीं थी. अब आप सोचिए, बीमारी में तो उन्होंने आपको कहा मत बोलिए, आप ठीक हो गए तभी वो कहते हैं मत बोलिए. अब सोचिए कितना बड़ा शर्म जुड़ जाता है. वो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, राइट? बट बाय द टाइम लोग क्या कहेंगे, आपकी जिंदगी चली जाएगी. बिल्कुल. हम हमारे चैनल के थ्रू जोसेफिन जी 2 चीजें सबको बताने की कोशिश करते हैं. पहला, एक्सप्रेस योर थॉट्स. आपने सही बोला. आप कई दफे जो आपकी क्लोज फैमिली मेंबर होते हैं उसमें आप इतने गहरे जुड़े होते हैं, आप अपने मन की बात नहीं कह पाते. मैं आपकी बात से सहमत हूँ. इसलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं एक अच्छा दोस्त आपको हेल्प कर सकता है. एटलीस्ट जो मेंटल हेल्थ का क्लाउड है, वो जो बादल उसको छटने में आपकी मदद कर सकता है. दूसरा, हम अपने दर्शकों को हमेशा कहते हैं, मन में भरकर मत जिए, मन भरकर जिए. बिल्कुल सही बोला. जब मैं ही नहीं रहूंगा तो मैं अपनी मन बातें रख के कहाँ जाऊंगा. तो हम सबको समझाने की कोशिश करते हैं, याद दिलाने की कोशिश करते हैं, सुसाइड करना किसी समस्या का हल नहीं है. बट मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता आपसे, सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा. जोसेफिन जी अभी भी थेरेपी में जाते हैं, बट आपने उनकी बातों में कहीं शर्म देखी? नहीं. इन्होंने एक बात बोली, मेरे को बुखार हुआ है मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ. अगर मेरे को डायबिटीज हुई मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ. अगर मुझे कोई चीज बोदल कर रही है विच इज टेकिंग माई पीस एंड काम अवे, तो मैं डॉक्टर क्यों नहीं जाऊंगा? क्या लॉजिक है इसके अंदर? सोचिए आप. मैं ये बार बार कह रहा हूं, ये एक दिन में ठीक नहीं होगा. लेकिन अगर हम लोग सिर्फ ये 2 चीजें करना शुरू कर दें. पहला, अगर आपको लगता है कोई आदमी आपसे बात करना चाहता है, तो उस समय भगवान ने 2 कान दिए हैं, सुनिए. एक मुंह दिए, उसे बंद रखिए, सिर्फ सुन लीजिए, उसको कहने दीजिए. और याद क्या रखना है, ये उसकी फीलिंग है, उसमें आपको कोई लेना देना ही नहीं है. आपको जज नहीं बनना है, उसको जो कहना है उसको कहने दीजिए. पहली चीज. दूसरा, जब आपने मुंह खोलना है तो आपने ये कहना है, मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी है, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ. आपने नहीं कहना मैं तेरे लिए कर देता हूँ. आप डॉक्टर नहीं है, जज नहीं है, भगवान नहीं है. आपने उससे पूछना है उसकी जरूरत क्या है.
अगर वो जरूरत आप पूरी कर सकते हैं तो ठीक है, वरना उससे कहिए चल तेरे डॉक्टर के पास चलते हैं, उससे बात करते हैं। एग्जैक्टली। अगर हम लोग ये कर पाएंगे ना तो शायद हम बहुत सारे लोग जोसेफिन जी की तरह हमारे आसपास देखेंगे Exactly. जो शायद कभी डिप्रेशन से झगड़े थे, लेकिन आज एक शूरवीर की तरह उस डिप्रेशन को हरा कर जमीन पर पटक कर दोबारा से हंसते मुस्कुराते हमारे साथ बैठ के बात करेंगे। दिल दी गल्ला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी so मच। much, Sunil ji, for inviting me. अब मैं 5 क्वेश्चन से